हेलो 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 हेलो, कौन कौन है आज मेरे साथ यहाँ पे लाइव पे? कैसे हैं सभी लोग? मैं तो एक मैच का मनोरंजन ले रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम की हालत काफी खराब है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और आज के शो में मैं चाहता हूँ कि हम फोकस करें कल के मैच के बारे में, यानी कि इंडिया पाकिस्तान। हर दिन दो मैच है अक्सर, बट एक मैच को हम फैन जो है हम थोड़ा ज्यादा इंथुजियाज्म से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से कल आप सभी भी जो यहाँ जुड़े हैं स्ट्रीम पे, आप भी इंडिया पाकिस्तान के लिए वेट कर रहे हो। साथ में बारिश का जो फोरकास्ट है दोस्तों, काफी काफी हाई है। कभी 70%, कभी 80%, कभी 90%। क्या सच है कोई नहीं जान सकता। काफी जो मेरे पत्रकार दोस्त हैं, फॉर्मर कॉलीग्स हैं जो अभी गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके चैनल्स, उनके रिपोर्ट्स, उनके अपडेट्स फॉलो करते आया हूँ। और सब यही कह रहे हैं कि यार 70 और 90% के बीच में रेन का फोरकास्ट है। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। कौन कौन जुड़े हैं मेरे साथ आज यहाँ पे? हाय बोलिए, लाइक ठोकिए, फॉलो करिए, स्ट्रीम को एंजॉय करिए। मैं आप ही के लिए यहाँ पे जुड़ा हूँ दोस्तों। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल। का दिन है। मैं क्या किया मैंने आज? सुबह उठा, मुझे एक आर्टिकल लिखना पड़ा, वो किया मैंने। फिर बेटे का जो पीटीएम था स्कूल में, वहां दौड़ा मैं। फिर वापस भाग के आया। मेरा 11:40 से लेके 12:30 तक जो पहला मैच, जो अभी ऑनगोइंग मैच है T20 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच, उस बीच में अपने ग्लांस शो यानी कि T20 अड्डा पे था सौरभ पंत के साथ, वो किया। फिर ब्रेक के बाद मैंने कुछ और काम निपटाया, लंच किया, बेटे के साथ कुछ ड्राइंग्स किए मैंने। और फिर बस मैं सोचा आप लोगों के साथ मैं जुड़ूं। कोशिश है कि हर 2 हफ्ते के अंदर एक लाइव करूं। समटाइम्स पॉसिबल, समटाइम्स नॉट पॉसिबल। वैसे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच है कल और बहुत इंथुजियाज्म है उस मैच को लेके, I said rather than sit and do a video and then package it and edit it and put it out, let's go live and see how many of you are here. तो अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। पहली बार आए तो स्वागत है, दोबारा आए तो आपका स्वागत है। भाई देखो, एक सेकंड कॉफी पीता हूं। आपको पता है, अगर आप 80 के दशक या 90 के दशक से गुजरे हो और थोड़ा 2000 के शुरुआत में, तो आप जानते होंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान शारजा में, दुबई में, यूएई में मैच खेले, खासकर शारजा में, तो फ्राइडे को होता था वो इंडिया पाकिस्तान जबरदस्त मुकाबला। क्योंकि वहां पे जो वीकेंड है वो संडे को खत्म होता है। मतलब सैटरडे द वीकेंड है, तो फ्राइडे सैटरडे इज द वीकेंड इन द यूएई। बहुत साल तक मैं, मुझे याद है स्कूल के दिनों में और फिर कॉलेज के दिनों में, आई यूज्ड टू वॉच इंडिया पाकिस्तान मैचेस ऑन फ्राइडे। अब जो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है पिछले कितने, काफी 8-10 साल से हो गया, क्योंकि 2012 से इंडिया और पाकिस्तान कोई भी बायलैटरल सीरीज में नहीं मिले। अगर मिलते हैं तो सिर्फ आईसीसी इवेंट्स या एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप और ऑफ कोर्स एशिया कप। तो क्योंकि ये मैचेस इतने मार्की हो गए, ये पहले से ही दोस्तों ब्लॉकबस्टर मैचेस थे। हम सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच कितना अलग होता है। पर क्योंकि ये टीम सिर्फ इन टूर्नामेंट्स में मिलते हैं और सिर्फ क्योंकि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स को, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच, तो अक्सर ये मैचेस संडे को होते हैं, है ना? जैसे कि 2015 का वनडे वर्ल्ड कप, इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच मेलबर्न में था संडे को, क्योंकि ये मार्की स्लॉट है, मार्की मैच। और मार्की का मतलब दोस्तों ऑब्वियसली दो, जब ऐसी टीम जिनके पास इतना राइवलरी है, जब ये खेलते हैं, बट ऑल्सो बिकॉज इनको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के फैन जो हैं वो विश्व के सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन वाइज, और ऑल्सो पैशन वाइज, जुनून वाइज, we're all mad और इंडियन पाकिस्तान फैंस। सो दैट्स व्हाई द ब्रॉडकास्टर डिसाइडेड कि भाई संडे का स्लॉट सबकी छुट्टी होती है, तो उस दिन हम इस मैच को कराएंगे। तो 2015 का मैंने जिक्र किया था। 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी था, इंडिया पाकिस्तान का जो लीग स्टेज मैच था जो इंडिया जीती, वो संडे को था। और फिर फाइनल था लॉर्ड्स में, ओवल में शायद, हाँ, वो भी फाइनल था। वहां पे मोहम्मद आमिर ने 3 गेंदों में हमारी टॉप ऑर्डर को एक तरफ कर दिया और पाकिस्तान वो मैच जीत गई। वो संडे था। फिर दोस्तों 2019 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, वो मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड पे, वो संडे को हुआ था। 2021 यानी कि पिछले साल का पहला मैच इंडिया पाकिस्तान बनाम, वो भी संडे को हुआ था, जहां पे शाहीन अफरीदी ने हमारी हालत खराब कर दी। फिर दोस्तों इस साल एशिया कप के जो 2 मैचेस थे इंडिया पाकिस्तान की, वो भी बैक टू बैक वीकेंड्स, वो संडे को हुआ था। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इट्स नॉट सरप्राइजिंग
First comment, Sasal is saying, Sasai is saying, hello, 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 how are you? Welcome to the stream. Stream, spread the word, call people onto the stream. तो वो ये तो इस बार भी जब मैंने देखा था कि इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो मैंने कहा भाई जरूर मैच संडे को होगा. इट्स अ नो ब्रेनर. तो सवाल मेरा ये है कि कल क्या सुपर संडे होगा या सॉगी संडे होगा. क्योंकि अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में जो एक सिलसिला चल रहा है अभी वो है ला नीनिया का. ला नीनिया मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेरिक सर्कल है जहाँ पे बारिश बहुत हो रही है पूरे ऑस्ट्रेलिया में, खास करके मेलबर्न सिडनी साइड में. और ये दोस्तों मैंने खबर देखा था कल कि इट इज वन ऑफ द वेटेस्ट पीरियड्स दैट ऑस्ट्रेलिया हैज एवर अंडरगॉन. लेकिन जहाँ पे कल बहुत बहुत बारिश के चांसेस हैं, आसार है बारिश के. आज का जो अभी फिलहाल मैच चल रहा है सिडनी में, वहां भी काफी बारिश फोरकास्ट थी. और टच वुड अभी तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मैच बारिश के कारण कोई रुकावट नहीं हुई इस मैच में. तो उम्मीद करते हैं कि कल भले ही पूरे 40 ओवर का मैच ना हो, किसी किस्म का मैच हो कल इंडिया पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, बिकॉज वी आर ऑल देयर टू वॉच दिस फैंटास्टिक मैच. बहुत फैंस के लिए दोनों तरफ, दोनों देशों में, उनके लिए असली T20 वर्ल्ड कप कल के दिन यानी कि अक्टूबर 23 को शुरू होगी बिकॉज ऑफ द rivalry between these two teams. ससाइज पूछेंगे सर पाकिस्तान की बॉलिंग दिक्कत देगी योर पॉइंट ऑफ व्यू. बिल्कुल. कल कल के लाइव स्ट्रीम पे मैंने भी अपने दोस्त के साथ, अपने गेस्ट के साथ हमने ये बात करी. आज भी मैंने और सौरभ ने इसको लेके थोड़ी बातचीत करी. इट इज इन द एंड अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग अगेंस्ट इंडियाज बैटिंग. क्योंकि इंडिया के बैट्समैन, हमारी बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छी है, काफी प्लेयर्स फॉर्म में है, एक दो नहीं है, लेकिन जो उनकी काबिलियत है, यू विल से इंडिया स्ट्रेंथ इज डेफिनेटली द बैटिंग, और इंडिया की वीकनेस जो है वो हमारी बॉलिंग है. लाइकवाइज पाकिस्तान की बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान की बैटिंग उनकी वीकनेस है. आई जस्ट थिंक अगर शाहीन आफरीदी दोबारा ऐसी स्पेल डाले तो इंडियन बैट्समैन को, खासकर टॉप ऑर्डर को, बहुत 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 सही तरह से डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां तक हम विकेट पे टिके रहे और कहां तक हम अटैक करें. क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक दोनों ओपनर में से एक को जल्दी रन बनाने पड़ेंगे पावर प्ले में. दोनों ओपनर अगर तेजी से मारेंगे, हो सके चल जाए, लेकिन विकेट खोने का चांस है और अचानक आप 20 पे 2 हो सकते हैं. लेकिन दैट्स इट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव टू ओपनर्स प्लेइंग आउट वॉचली. तो मैं चाहूंगा कि रोहित जैसे पूरे इस साल वो जल्दी से 20, 25, 28 रन बनाते आए, मैं चाहूंगा कि वो ऐसे रोल करेंगे. बिकॉज केएल राहुल फ्रैंकली आई थिंक मेंटली वो अपने आप को सेट कर चुके हैं लंबी पारी खेलने के लिए. ठीक है एक हद तक, पर अगर शाहीन शाह अफरीदी का ऑफ डे रहा तो दे नीड टू कैश इन एंड हिट हिम. बट बात सिर्फ शाहीन की नहीं है. शाहीन फिलहाल इंजरी के बाद आए तो शायद वो अपनी फुल फोर्स में ना हो, लेकिन जो हारिस रौफ है दोस्तों, मोर देन नसीम शाह, मोर देन हसनैन, मोर देन मोहम्मद वसीम, आई थिंक हारिस रौफ is going to be a very very big threat for India's top order. तो अगर हमारे बैट्समैन वो दोनों पेसर्स को खेले, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि स्पिन के अगेंस्ट, खासकर लेफ्ट आर्म स्पिन, हमारे बैट्समैन को कितनी दिक्कत होती है. तो मोहम्मद नवाज के 4 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे और शादाब खान के 4 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे. तो ये 8 ओवर जो है, यानी कि 4 शादाब के और 4 नवाज के, I expect India to do well, but perhaps not accelerate because we have a problem of scoring a little bit under par against spinners. तो बाकी की जो 12 ओवर्स हैं फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी अगेंस्ट हमारे बैट्समैन को तेजी से रन मारने पड़ेंगे. सो दैट इज माय पीओवी ऑन पाकिस्तान बॉलिंग एंड वेदर इट विल गिव दिक्कत. शाहीन अफरीदी बिल्कुल टैलेंट के बेसिस पे दिक्कत दे सकते हैं, बट क्योंकि मैं मानता हूं कि शादाब और नवाज के ओवर में ज्यादा रन नहीं आएंगे, तो ओनस पड़ता है कि बाकी के 12 ओवर जो शायद 3 या 4 फास्ट बॉलर्स डालें, उन पे रन बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टीम को दिक्कत होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashutosh Bajpai, a familiar name. Welcome back, Ashutosh. Asia Cup first match we bounced out Pakistan. Can that be a strategy? It can, especially in Australia, Ashutosh. But to bounce out people, you have to have your bowlers capable of bouncing. Arshdeep is not a bowler to bounce. Bhuvneshwar is not a bowler to bounce. Shami is a bowler to bounce, but Shami might not play this match. And Harshal Patel, yes, you can argue that the kind of slow balls that he bowls, they can get stuck in the pitch. But frankly, अगर हम देखें, एक ही bowler मेरे हिसाब से आके अपनी पेस से, अपनी लाइन और लेंथ से पाकिस्तान के बैट्समैन को बाउंस कर सकते हैं, और वो है हार्दिक पांड्या.
But unfortunately, that one match which you referenced when India bounced out of Pakistan in the first match of the Asia Cup, we have not seen Hardik Pandya capable of doing that in any T20I since. He is our sixth bowler. He cannot be expected to come in and every time bowl those four overs of bounce. If it works out, fantastic. You've made inroads into Pakistan's frankly shaky middle order. But I just think India do not have enough bowlers to bounce out. Bhuvneshwar cannot bounce you out. If he tries, he's going to get smacked. Arshdeep's job is not to bounce out, and Harshal's job is not to bounce out because these three bowlers lack the required pace. Hardik is the best choice, but when he's your sixth bowler, it's a bit risky. I hope he does. He's got the skill, but I don't know whether it can be a plan that all the four fast bowlers use, or three fast bowlers. Vivek Damgi saying, what is your playing 11 for tomorrow? Well, from an India perspective, I'm going to say Rohit Sharma, KL Rahul, Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Hardik Pandya, Dinesh Karthik / Akshar. They're both going to play. It just depends who goes six. I probably think Akshar would go at six because he's a lefty and the team likes to have Karthik bat low. So Karthik 7, 8. I'm going to go with Ashwin. I think he'll edge out Chahal because of the fact that Pakistan have several left-handers, especially Fakhar Zaman coming in. That's 8. And then 9, three fast bowlers will be Bhuvi, Harshal, and Arshdeep. So that's my 11. Prateek J Singh, hi Jamie, how are you doing? I'm very well. How are you? Thank you. What's your pick for bowlers? Well, I just gave the answer. I would have normally expected it to be Chahal and Akshar. Chahal because of his experience and his success in Australia, and Akshar purely because he's the most successful Indian spinner going around right now. And you want to reward consistency, you want to reward success, you want to reward someone who's in a good space. And I still think, despite his inexperience and the fact that left arm spinners have not been all that successful, I know Mitchell Santner has done very well. They're a bit of a risk, but I would still pick Akshar because he's India's most formed spinner. But no Chahal as far as I'm concerned. And again, what does my view matter? I'm not an Indian selector. But because of Pakistan's left-handers and the bigger grounds, Ashwin's experience and Ashwin's his brains, I would think he would perhaps get the nod as the second spinner tomorrow. I think an off spinner of Ashwin's class and experience and a left arm spinner of Akshar's thinking, his street smart mind, but more importantly, his current form should be India's two spinners. Fast bowlers, like I've said, Bhuvneshwar and Arshdeep are hands down. I know Harshal Patel has been problematic at the 19th over, but the 19th over that he bowled in India's only warm-up match against Australia recently, this week in fact, when he gave only 5 runs and took 2 wickets, I think that has edged him out over Shami because yes, Mohammad Shami only bowled 1 over, 4 wickets fell, but a lot of Shami's success goes down to the outstanding catch that Virat Kohli took. Had Virat Kohli not taken that catch, that ball could have gone for a boundary, and then Mohammad Shami would not have even bowled his full over out and perhaps not even nailed those Yorkers. Plus, Shami's not played a T20I for India since last year's T20 World Cup. He's rusty. I think the fact that this team rewards consistency and Harshal Patel has played more matches this year, मतलब 2022 में हर्षल पटेल ने ज्यादा T20 मैचेस खेले हैं जितने कि शामी ने अपने 9 साल की करियर में. That's why I think they're going to reward consistency and they're going to pick Harshal as the third fast bowler. Vivek Damgi, any chance for punt since we're in Australia? Unfortunately, no. I've said this numerous times and a lot of you viewers have agreed with me. अगर ऋषभ पंत आपके टॉप 4 में नहीं है तो वो आपके 11 में फिट नहीं होते. ऋषभ पंत, and again, coffee. I'm a big Rishabh Pant fan. He's the most entertaining and engaging Indian cricketer for me going around. I've said it before, he's already India's all-time best keeper batsman in the test format, but in the T20 format, he's not been able to successfully figure out how he should bat, what his role should be. He cannot blame anyone for not getting chances. He's been given a long rope. He's been given many chances. Unfortunately, he could not cash in on that. Also, not having a fixed role, perhaps, has been a factor, but right now on current form and the fact that India have invested so much time in getting Dinesh Karthik ready, plus you need 6 bowlers. You cannot play 5 bowlers with this Indian bowling attack. So on that basis, Rishabh Pant ka koi chance nahi banta unless DK gets injured, because after all, he is the only keeper, backup keeper in our squad. Vivek Singh is back. Hi, sir. Hi, kaise ho, Vivek? Good to see you. Another regular viewer and supporter. बाकी आप लोग बताइए आपका वीकेंड कैसे चल रहा है. आप लोगों ने क्या किया? क्या आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच देख रहे हैं? देखते हैं क्या स्कोर क्या हुआ उस मैच में यार.
Let's see what's happening. हालांकि ये डिस्कशन कल के मैच के बारे में, ओहो 55 for 4, मुश्किल है भाई। स्पोक अबाउट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, सैंटनर 2 विकेट ले गए, क्या बात है यार, बहुत ही अनुभवी बॉलर है मिचेल सैंटनर। एनीवेज, कल की मैच की तरफ अगर हम थोड़े देखें, अपना रेडार उस रुख में डालें, Dixon Sider, what a name, Dixon Sider. What's your real name, my friend? Your real name cannot be Dixon Sider, can it? Without Bumrah, how much would it impact India's bowling lineup? Well, I've said it many times. Bumrah is not replaceable in this current squad. He's just such a rare bowler. So there's no replacement for him. What do? You back the success that Bhuvneshwar has had this year. He is India's leading wicket taker this year. You back him. You back his experience. You need experience, especially with Bumrah not being around. That experience word becomes so vital, all the more vital, I would say. So Bhuvneshwar has to play. Ashwin, again, the experience that he brings, forget his wicket-taking form, his role in T20s this year across the IPL and across Indian cricket has been more of a holding bowler to keep runs down and let others take wickets. So from that angle, Ashwin's overs are massive. And then you have someone like Arshdeep, who has only played 13, 14 matches, but he's India's best, death bowler this year. So you need them. So again, Bumrah, my friend, Dixon Sider, Bumrah is not replaceable, but what do? You can't think about, yeah, Bumrah nahi hai. Aage badho, play the best 11 you have and see how it goes. But I'll say it again, like I said in many shows, India's 6 bowlers, Hardik included, have to bowl exceptionally well out of their skins to give the batsman that extra bit of comfort. Vivek Gangi, if over gets reduced, which team will have the advantage? India. I said this on my morning show as well with Saurabh Pant. India, because of their batting, will be the favorites if it's a shortened match. 5, 7, 8 over match. Vivek Singh पूछ रहे Shami or Bhuvi or both. Look, Bhuvi has to play. Arshdeep has to play. It'll be a very, very tough call to leave out Shami or Harshal. But like I just said a few minutes ago when I was asked this similar question about the bowling lineup, मेरा जवाब ये है विवेक सिंह कि हर्षल ने इस साल इतने T20 मैचेस खेले, माफी चाहूंगा, इतने T20 मैचेस खेले हैं इस साल जितने शामी ने अपने 9 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में नहीं खेले। 1 साल से मोहम्मद शामी इंडिया की T20 स्क्वाड में नजर नहीं आए, और क्योंकि उनकी IPL franchise इतनी सफल IPL franchise, when they only bowled him for 11 overs across the longest IPL, when they only bowled him for 11 overs at the death, it clearly says कि not the Indian team and not any IPL franchise views Shami as a death bowler. And you already have enough power play specialists. Isliye, I think Harshal Patel will get the nod over Mohammad Shami. I could be wrong, because at the end of the day, Shami has 4 wickets to show for in 1 over in a match which India won against Australia, a practice match. But mere hisab se, the consistency and the longevity will be rewarded, and Harshal will get the nod over Shami. Ashutosh Bajpai, Siraj and Shardul are less leaky and take more wickets. Would India have picked Shami had Titans not won IPL? It's a good thing. Look, he had a good IPL, but like I said, he took 8 wickets at the death, but he gave about 9.5, 9.6 runs. But he only bowled, and I'm going to reiterate this point. मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात समझें यहाँ पे. If a bowler across a 2.5 month tournament for a very successful IPL franchise only bowls 11 overs at the death, यानी कि पिछले 5 ओवर में, 4 ओवर में, if you only bowl 11 overs, that means that your franchise does not view you as a death bowler. You've not played for India for a year in this format. How can Mohammad Shami be expected to come and be successful? This I'm still struggling with. I would like to see Shardul Thakur more than Siraj, because Shardul has a knack of getting wickets and he offers you a lot with the bat. Shami does not offer you much with the bat. Look, he's a fantastic bowler. I think he's best suited to Test cricket. Shami, by nature, is not a natural T20 bowler. Sorry. So I think we're expecting a lot of Mohammad Shami to just rock up a year from being part of the squad and bowl well. That's my views on it. Dixon Sider saying none seem to keep NZ in their semi-final favorites. Yes, you're right. They always have a knack in ICC tournaments. Kiwis played well. Absolutely. I said this in my preview yesterday. I said this in my live yesterday. And I said this in today's preview for the New Zealand-Australia match at this morning at 11:30. Okay,
we all, I think most of us have a soft spot for teams like New Zealand, West Indies. And you're right, Dixon Sider. Excuse me. New Zealand का record IC tournament में बहुत अच्छा है. But this current team, with Ken Nielsen not scoring runs, he's a pale shadow of himself. आज तो मतलब he played so badly, and a couple weak links in the batting, like not getting Martin Guptill in. The guy, this is his 7th World Cup. Not having him means that they have problems. I think Finn Allen was very, very good today. Devon Conway batted 20 overs for 89 odd. They have a good bowling attack, but they've been so inconsistent as a T20 team, which is why I think not many teams would put them in their top 4. But like I said in yesterday's team preview, if there's one team which could knock off Australia and England from the top 2 spots in that Group 1, it is definitely New Zealand. So I think not people are not writing off New Zealand, but given the factors I just outlined, plus they have a terrible record in Australia. Since 2011, no New Zealand team has managed to beat Australia across any format in Australia. So I think these factors are why people are not putting them in the top 4. But yes, you're right, Dixon Sider. They are very dangerous. Real name is Deepak. Thank you, Deepak. Good to know your real name. Big fan of your insights. What's the story behind Dixon Sider? If you want to share, please. Thank you. If you could. Vivek Singh, but Bhuvi and Herschel don't have a zippy Yorker or any Yorker. Shami can be the look. Let's look at this question in 2 parts. Shami can be, of course, यहाँ पे Shami की काबिलियत की बात नहीं है. But like I said, he's not played a T20I for India in 1 year. He's not played a white ball match in some 4 months. And he's not, if you're a Mohammad Shami with all that experience, I would assume you to be capable of bowling 2 overs in the power play and 2 overs at the death. But लेकिन जब आप डेथ बॉलर हो ही नहीं, जब आपका डेथ रिकॉर्ड इतना खराब है, तो आपके 2 ओवर तो वैसे ही कट गए, राइट? इंडिया's डेथ बॉलिंग इज ऑलरेडी प्रॉब्लमैटिक. हर्षल नहीं चल रहे, भुवी नहीं चल रहे, केवल अर्शदीप चल रहे. Do you want to add a third poor bowler into that slot? I would say no. Much better to pick someone who can do the job. I get it, he can be lethal, लेकिन जिस बंदे के पास अनुभव ही नहीं है T20 खेलने का IPL से और 1 साल से, it's very hard to expect him to come and do the job. That is just my thing. रही बात आपकी पहली सवाल के zippy Yorker, बिल्कुल they don't have Yorkers, पर आजकल किसी इंडियन के पास वो Yorker नहीं है. शामी ने कर दिखाया एक मैच में, but it's a very very tough ball to nail. So मैं इसलिए कह रहा हूँ शामी मेरे हिसाब से इतना कुछ खास नहीं ला रहे हैं इस bowling lineup में जो शायद कोई और लाते हैं. लेकिन उमरान मलिक, you need pace and bounce more than Yorkers right now. That's my view. Ajay Sharma, according to you, who will win, India or Pakistan? हाँ, क्या प्रश्न पूछा आपने. देखो, हम चाहते हैं कि इंडिया जीते. I think, like I said, it will come down to how India's batsmen, how many runs they score off those 8 overs. 4 from Shadab and 4 from Mohammad Nawaz. Pace bowling, Pakistan की बहुत अच्छी है. But I think our batsmen are slightly better against pace right now. इनकी weakness है spin के against, खासकर left arm spin. और जो मोहम्मद नवाज के 4 ओवर होंगे, उन पे अगर 40-45 रन नहीं आए, अगर 20-28 उसके आसपास आए, तो it's going to be very very tough for you to get to 200. और आप सब शायद इस बात से सहमत होंगे कि इंडिया को लगातार हर मैच में 200 से ज्यादा तो बनाने पड़ेंगे इस बॉलिंग के साथ. So if it works out, India should be favorites. But I think, like this question came earlier, in a shorter match, क्योंकि बारिश के आसार बहुत हैं, chances बहुत हैं, in a shorter match, I would say India have the advantage because they have Surya, they have Gail Rahul, they have Rohit, Virat Kohli, Hardik Pandya. So that's my answer. Dixon Sider saying, yes, well, the Indian bowling lineup pick up form throughout the tournament. We hope so. We hope so. Bowling wins tournaments, batting wins matches. बिल्कुल सही कहा आपने. But do we have the bowling to win tournaments? I don't think so. Vivek Dangi saying, view on West Indies downfall. West Indies downfall is very sad because जैसे कि मैं आज के सुबह के शो में बात कर रहा था with Saurabh Pant, I think West Indies is that one team which is always the neutral team. You could be Indian, Pakistani, Sri Lankan, whatever team you are. अपने खुद के देश के टीम से अगर कोई टीम यूनिवर्सली सब लगभग मोटा-मोटा पसंद करते हैं तो वो है वेस्ट इंडीज. बट just too many inconsistent players. ना तो इनके players CPL में कुछ खास करते हैं, ना तो विश्व टूर्नामेंट्स में. और ये टीम जो 2012 और 14 में जीती, ये डिफरेंट टीम थी. इसमें गेल नहीं है, रसल नहीं है, नारायण नहीं है, ब्रावो नहीं है, सैमी नहीं है.
चलो ये होता है, it's very natural that players get old and they fade away. But the current players, you cannot really name any, even three consistent players. हेटमायर के पास इतना टैलेंट है, पर उस भाई ने दो फ्लाइट मिस किए. Then you have who else you have? You have Holder consistent. Um, Brandon King is inconsistent. You have who do you have? Nicholas Puran. Nicholas Puran का रोल क्या है इस टीम में? I don't understand. उनकी कप्तानी खराब है, उनकी बैटिंग खराब है. So these things put together lead me to realize why this team is so inconsistent. Why Mohsin Khan, Rahul Tewatia, who finished matches, are not considered? I don't know. Tewatia is probably unfortunate to have not gotten a chance so far. Ashutosh Bajpai is another. एक सेकंड दोस्तों, कोई आया है दरवाजे पे. होल्ड दैट थॉट. कौन है? क्या मामला? कब? नहीं, वो तो आए थे, कल आए थे सुबह, वो ट्यूबलाइट चेंज करने. ठीक है, बाय. सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन आया था कि ये पूछने के आपने इलेक्ट्रिशियन बुलाया. मैंने कहा नहीं, वो तो मैंने कल सुबह बुलाया था, 24 घंटे हो गए. एनीवेज, दीस डिस्टर्बेंसेस हैपन. मेरा जो दफ्तर है वो बिल्कुल डोर के पास है. तो एनीवेज, हम कहां थे हम? हाँ, आशुतोष भाजपा पूछ रहे हैं व्हाई मोहसिन खान एंड राहुल तिवारी हु फिनिश्ड क्रूशियल मैचेस नॉट कंसीडर्ड. आई डोंट नो, you'll have to ask the selectors. और आजकल माशाल्लाह जो हमारे सेलेक्टर्स हैं वो तो बात ही नहीं करते मीडिया से. वो समझते हैं कि हम लोग उस लायक नहीं है सवाल पूछने का और जवाब देने का. तो खैर छोड़ो उस बात को. Pratik saying if India loses 5, we can say 3-4 within power play. Let's hope that doesn't happen. But then it's game over. No matter who comes next, the game is over. Do you think India should set Ashwin ahead of DK in terms of batting order? नहीं भाई, नहीं. Ashwin, if you're expecting Ashwin to walk in at number 4 or 5, फिर तो भाई आप वर्ल्ड कप भूल जाओ, आप फ्लाइट ले लो, आप वापस आ जाओ. नहीं होगा भाई, नहीं होगा. Sorry. Chirag is saying, man, pulse of this World Cup is different. कुछ expected. बिल्कुल. The topic of my show yesterday on Wednesday show was, is this the most unpredictable World Cup ever? And I think it is, because ये पहला World Cup है दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, and it's very tough to predict what Australia's grounds will throw up, you know. Plus we've seen in West Indies when यहाँ पे नहीं है, Sri Lanka barely scraped through. Namibia, despite a great start, they didn't go through. Scotland's there. It's been a very fantastic week of qualifiers. And Australia, the team I had as favorites, are really struggling against New Zealand. So, बिल्कुल, the pulse is very, very different. अजय शर्मा कह रहे हैं इंडिया अपनी फील्डिंग कब इंप्रूव करेगी? कहते हैं लोग मुझे राम जाने. Who knows, man? Catching is problematic. Dixon Sider saying it's an IPL season that always increases towards 3 months, a reason behind T20 World Cup having just 12 teams. No. It's the second part of the question. It is based purely on viewership. It's got nothing to do with any league, not the IPL. It's just the broadcasters have given enough evidence of not enough people coming to watch associate level teams play. It's unfortunate that is the reality and that's how the broadcasters think. But that is the main reason why we saw fewer teams at the one-day World Cup. And I'm glad at least we have 16 this time. But it does in the end, Dixon Sider or Deepak, as it does come down to viewership. Vivek Singh, how MCG is different from SCG in terms of seam bowling versus spin? एक तो MCG बहुत बड़ा ग्राउंड है, बाउंड्रीज बहुत बड़े हैं और वहां पे स्पिन कम, वहां पे सीम ज्यादा होता है. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इंडिया के बाहर सबसे इंडिया लाइक ग्राउंड है. वहां पे स्पिनर्स बहुत चलते हैं, वहां पे वो थोड़ा स्लो एंड लो है. That is the main difference. The boundaries इतने बड़े नहीं हैं जितना MCG में है. MCG traditionally has more than swing, it's aided seam bowling. अगर आप seam और swing में अंतर समझते हैं तो वहां पे जो seam bowling है, आपने कहा था seam bowling in fact, it aids you there. There's more bounce there. The first few overs are very, very crucial against pace. And spinners traditionally do better at the SCG. Vivek saying you're still around. India should bat first or bowl first. I always want them to bat first, but Rohit Sharma chooses to bowl first. So India will bowl first. Even in a rain match, he will bowl. Bharat Kotwani 8204 New Zealand फिर से reminder दे रही है we are not done yet. Absolutely, another person brought this up as well on the stream आपके आने से पहले. बिल्कुल, New Zealand को थोड़ा इस बार under the radar view किया गया है, despite the fact they have a very good record in ICC tournaments.
न्यूजीलैंड टीम है, मोटा मोटा यही टीम दोस्तों, यही टीम T20 टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हकदार के विजेता फिलहाल यही है। ये 2019 के वनडे फाइनल तक पहुंचे और ये पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप तक पहुंचे लगभग इसी टीम के साथ। सो यस, they might not be anywhere near the form or the strength that they were at last year's World Cup, but that does not mean they cannot make the top 5. Pseudo name, I hate apple cider. ठीक है, बिल्कुल सही है, आई एम नॉट बिग फैन ऑफ इट, बट ये डिक्सन का क्या लेना देना है मैं समझ नहीं पाया। हरमनप्रीत सिंह, सर आज का मैच न्यूजीलैंड जीतेगा शायद, बिल्कुल जितना मुझे लग रहा है। क्या है स्कोर अभी रिसेंटली क्या हुआ? बड़े 86 फॉर 6, गई भैंस पानी में भाई, ले गए। गुड गुड वेक अप कॉल फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू न्यूजीलैंड, हैट्स ऑफ टू देम। Is South Africa a strongest side in our group? No, they're not. I'll tell you why. I've been asked this question before, Vivek. South Africa, on paper, I mean, with that bowling attack, they have no business not making it to the semi-finals. But the batting is problematic despite the volume of runs they have. और साउथ अफ्रीका ना, मैं इनको लेके किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में, मैं आपके लिए या कोई मुझसे पूछे, I struggle to pinpoint the reason why I do not rate them at any ICC event. जहां तक मैं खुद की बात करूं, देखो 92 में जब ये वापस आए थे कुछ 20 साल के बाद, तो मुझे ज्यादा उस वर्ल्ड कप का याद नहीं और मुझे खासकर उनके मैचेस याद नहीं। मुझे याद है जडेजा का कैच जो उसने गैबा पे, जो जडेजा ने एलन बॉर्डर का कैच लिया था, और मुझे किरण मोरे का वो जंपिंग, वो जो जावेद मियांदाद ने उन्हें इमिटेट किया था, मुझे वो याद है। और मुझे फाइनल को लेके वो 2 बॉल याद है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। लेकिन 96 से लेके इस वर्ल्ड कप तक जितने भी साउथ अफ्रीकन टीम्स हैं, वो हमेशा हर वर्ल्ड कप में फेवरेट्स माने जाते हैं, मतलब टॉप 3 में, क्योंकि पेपर में इनके स्किल में मुकाबला कोई नहीं है। पर क्यों हर वर्ल्ड कप में बैड लक, कुछ अनहोनी, कुछ गलत कैलकुलेशन, कुछ चोक, वो क्यों करते हैं? दिस इज व्हाई आई एम जस्ट अनएबल टू से कि साउथ अफ्रीका और एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग टीम, और ऑन पेपर वेरी स्ट्रॉन्ग। पर इनके जो कान के बीच में जो चलता है, मैं आज तक कोई वैज्ञानिक हो या कोई रॉकेट साइंटिस्ट हो, शायद वही समझ पाएंगे, समझा पाएंगे मुझे कि भाई इस साउथ अफ्रीकन टीम को लेकर क्या होता है। दे आर जस्ट नॉट इन माय बुक्स since the 2003 World Cup onwards, they stopped being a force to reckon with at ICC events. तो लगभग 20 साल तक किसी भी टूर्नामेंट में वो उस लेवल के प्रदर्शन नहीं दे पाए जो वो काबिल हैं। This is why I just cannot pass a proper comment on them. Your prediction for 4 semi-finalists. Said this on about 5-6 streams: England, Australia, India, Pakistan. My top 4 teams. Dixon Sider is saying, I agree with you. Thank you, thank you, thank you. India should bat first. What's with Rohit? Bhai, Rohit ki baat nahi hai. Most teams prefer to chase. Very few captains opting to bat. We saw this in last year's IPL. We saw this in last year's T20 World Cup. We saw this in this year's IPL. Teams just seem to prefer to want to chase. Chaliye, due factor hai. You want to know what runs are there. But if you have a weak bowling attack, like India's got a very, very weak bowling attack, why would you want to field first and then, chase 210, 220? Would you rather put up 220 and then see where the match goes? आप एक वीक बॉलिंग अटैक को बोल रहे हो, जा भाई तुम लोग काम संभालो। ये एटीट्यूड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम को लेके। But again, it's not just Rohit. Many captains choose to field. I don't know if I win the toss, unless it's a green track and there's rain expected, मैं तो भाई कहता हूँ बैटिंग कर लो हमेशा, बैटिंग। Is Indian team the new choker? Vivek is पूछing। tough to say that word choke, but देखो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि पिछले 9 साल में, यानी कि 2013 से इंडिया कोई भी आईसीसी ट्रॉफी अपने हाथों नहीं कर सकी। इस लिहाज से बिल्कुल वो चोकर्स का टैग जो है, चोकर्स का किताब जो है, आप उन पे लगा सकते हैं, आप उन पे चिपका सकते हैं, because ultimately you play this game or any sport to win trophies, to win titles, to win championships, to win pennants. And when in 9 years you've been in so many finals, so many semi-finals, you're not able to win one major trophy, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप चोकर वाली टीम है। ससर सिंह, बॉलिंग में हर्षल या अर्शदीप दोनों खेलेंगे भाई, दोनों को खेलना ही पड़ेगा। बात उनकी नहीं है, सवाल है हर्षल या शामी की। And like I said a few minutes ago when I was asked this question, I think it'll be Harshal for this first match. Ajay Sharma, spinners of Indian team for World Cup. Well, they've picked Ashwin, they picked Akshar, Ashwin, Chahal,
Deepak Huda the part timer, and Bishnoi in the standbys. For this first match, like I said to a question a few minutes ago, for this match against Pakistan, I see it being Ashwin and Akshar. But long term, I would see Akshar being paired up with the leg spin of Chahal. Your view on PCB versus BCI? Look, we all know कि इस आफत की जड़ कहाँ से आया है. We know the reasons why, but what gets to me is how can Jay Shah, as ACC president, the man who chose finally Pakistan as the venue for next year Asia Cup, how can that same person, after choosing the venue, say कि भाई अब हम वहां नहीं जाएंगे? तो पाकिस्तान का रिएक्शन है वो बिल्कुल जायज है, and I get the fact there are security concerns. Indian team का वहां it's not about cricket, it's about politics, it's about optics, it's about many factors. So I get where this apprehension comes from, but भाई इतने सारे टीमें तो जा चुकी हैं इस साल, Pakistan last year, so things have got better, but it's not about cricket. We all know it's all about politics and optics. So that's my take on it. Chirag Kuru, shouldn't it be Bhuvi or Shami? No. I think you probably joined the stream a little late, Chirag. I outlined why it should not be this, but because you asked, I will say it again. Shami has not played a T20I for India in 1 year. He's not played an ODI for India in 4.5 months. He is not naturally a T20 bowler, and in the depth, his IPL this year was pretty poor. Yes, overall he got IPL wickets, and his team went on to do very well. But you're picking someone who's not been considered for 1 year by your selectors. अचानक उस बंदे ने ऐसा क्या किया कि आप समझते हो कि वो आपके पहले 11 में? This has been my very honest take. I don't understand what Shami can bring to this current team when he's not been bowling with a white ball at the international level for 4 months and not in this format for 1 year. Bhuvneshwar Kumar, despite the death over problems of the last 2 months, is India's highest wicket taker this year. He's consistent. He has a very specific role. Power play ke andar is saal he has 3-4 wicket hauls. He's the first bowling name on the sheet along with Arshdeep Singh. And because it comes down to, in my estimation, Shami versus Harshal, because Harshal has played more T20 matches this year than Shami has played in his career, it will be Harshal. But again, the team management might get swayed by Shami's 4 wickets against Australia in that practice match. And it's very possible that Shami will play tomorrow's match. But for me, to answer your question, it's not between Bhuvi or Shami. There is no mukabla. Hands down, Bhuvi any day. Dixon Sider is saying, I'm feeling Ashwin could be a key this time, could be involved in the big game. Absolutely. You need someone of that class, that experience, that guile. So, bilkul, main aapki baat se sehmat hu. Ashutosh saying, Akib Javed said they might need India to come, so they'll shift to UAE. I also believe that that will be great than in Pakistan. Bilkul, I'm on the same page. You need to have a neutral venue. My point is, why did Jay Shah, in his capacity of ACC president, say कि Asia Cup Pakistan में होगा और फिर कहते हैं कि पर हम वहां जाएंगे? It's like me saying, मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम करूंगा, बट मैं यहाँ नहीं आऊंगा, आपको कोई और ऐप खोलना पड़ेगा. It just doesn't make sense. But bilkul, I get the security threat. If the Indian team goes, which they won't, it will be a VIP level of security, which frankly, despite Ramesh Raja's statements, despite his best intentions, the PCB cannot afford to have the Indian team. आपको शायद ये मालूम होगा नहीं होगा, अभी जो इंग्लैंड टीम गई थी 7 T20 मैचेस खेलने, PCB bled out money. They went to a loss because जो एक इंग्लैंड स्क्वाड के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए, उनकी पूरी टूरिंग पार्टी के लिए जो खर्चे उठाए PCB ने VIP ट्रीटमेंट के लिए, it cost them more than they got back from the series. So India will not go to Pakistan for very reasons. They definitely should play somewhere like the UAE. Bilkul. Sasai saying your view on Suryakumar Yadav. I've done 3 videos in the last 2 weeks on Sky. Sky is the #1 T20 batsman. He's the best T20 batsman in my view going around because he's confident, he accelerates, he's got a fantastic range, he finds the gaps like no other player, and he plays shots that no other players can play. If you watch my video yesterday, 5 to watch, he's my #1 batsman to watch. And I've said it many times, there is no better T20I batsman than Suryakumar Yadav. Chirag is saying thoughts on KL Rahul and UZ being in a lot of World Cups and not performing. Bilkul, I think KL Rahul's record in big matches leaves a lot to be desired. Chahal has been very good, but he's been very inconsistent in the last 6 months.
which is why I don't think Chahal will start tomorrow, despite the big rounds, despite the somewhat sluggish nature of the track. I think it'll be Ashwin and Akshar. Look, KL Rahul, we've seen. It's like since he's come back from injury about 3 months ago, every T20 series he's played, every third match, he's played a blinder. There was one in the Asia Cup against a weak team, no issue. There was one against Australia. There was one against South Africa. And there was one against the Western Australia second 11, and there was one अभी हाल ही में this practice match एक जो हुआ था. तो जब आप हर दूसरे तीसरे पारी में आप डे 180, 200, 220 के स्ट्राइकर पे आप खेल सकते हो, तो यहाँ बात आपकी टैलेंट पे नहीं है, आपकी काबिलियत पे नहीं है. But what happens in those big matches? Why all of a sudden he fall to 12 of 18, 15 of 24? He might accelerate, but how does a batsman fall to a strike rate of 60, 57, which we've seen Rahul do many times in the IPL and also at the international level? I don't know why. And I've said it before, and I think for me, the strangest thing is KL Rahul seems to play so often like he's playing for his play. जैसे कि वो अपनी जगह के लिए खेल रहे हैं. भाई आप केएल राहुल हो, आपके पास इतना टैलेंट है जो आधे आपके टीममेट्स के पास नहीं है. और सबसे बड़ी बात, आपके पास टीम का बैकिंग है, राहुल द्रविड़ का बैकिंग है, रोहित शर्मा का बैकिंग है. रोहित शर्मा ने कहा था कुछ हफ्ते पहले कि केएल राहुल हर मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप में. तो जब आपके पास इतना खुले में आपके पास सपोर्ट है टीम का, तो भाई आप उस काबिलियत से खेलो जो हम सब जानते हैं आप खेल सकते हो. That's my honest take on KL Rahul. Fantastic player, fantastic. But all too often he gets bogged down. Dixon Satter, please no more tournaments in UAE. Toss off. Hey, bilkul, I agree with you, my friend Deepak. Tosses win matches in the UAE. 2018 वर्ल्ड एशिया कप देखिए आप पिछले 2 IPL देखिए, आप पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप देखिए, आप इस साल का एशिया कप देखिए. It's a convenient venue, a neutral venue, great hotels, great interconnectivity, good grounds. But जब मैच टॉस पे डिसाइड होता है तो मेरे हिसाब से उसमें मजा कोई नहीं है. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ. बताइए और कोई है सवाल? निखिल सहोटा, भैया can you tell me how much in a day Rohit Sharma or any Indian star donate his time to practice? Are they consistent or have you become a star player? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये मैं विनोद कामली के टाइम से निखिल सुनते आया हूँ कि प्लेयर स्टार बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं करता. ये मेरे हिसाब से जितना भी मैंने 17 साल के करियर में देखा है, ये बिल्कुल गलत है. बहुत बहुत मेहनत करते हैं हमारे प्लेयर्स, स्पेशली नाउ बिकॉज़ दे नो इतना पैसा आ चुका है गेम में, और अगर आप रन नहीं बनाएंगे, अगर आप फिट नहीं होगा, तो वो पैसे चुटकाई में वो गायब होगा. दिस इज व्हाई MS Dhoni is still staying somewhat fit because he knows how much is riding on him commercially from being a part of the CSK franchise. तो ये लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं. मैं सालों से इन्हें देख के आया हूँ, अलग-अलग प्लेयर्स को बहुत बहुत मेहनत करते हैं. सो इस बात पे मैं कहूँगा कि they do not lack for anything. Yes, they might put on weight. I think Rohit's carrying a bit of extra weight, so is Pant, but it's not necessarily because they're not training as hard as anybody else. Vivek saying, true, KL Rahul has talent, but fails to express when needed. You said it yourself. Vivek Singh is saying, do you agree we could have given more chances to Shami or Umran since last World Cup rather than Avesh Khan? If we had, maybe Umran and Shami could have been in team today. Very good question, Vivek. I think Avesh Khan got a lot of chances, deserved chances, because he came off a very good run in domestic cricket for MP, came off a good stint with India A, and he came off 2 very good IPL seasons for Delhi. तो मेरे हिसाब से उनका टीम में आना बनता था. इन्हें चांसेस बहुत मिले. फैक्ट है कि आवेश खान ने उन चांसेस को लेकर वो प्रदर्शन नहीं दिया, उसके आसपास नहीं दिया जिनके वो हकदार थे from a domestic and IPL perspective. He just did not live up to expectations. I don't think he'll get a chance anytime soon because frankly, he blew those chances. He was a massive disappointment. But he cannot say, like I said about Pant, he cannot say कि यार मुझे मौके नहीं मिले. उससे बहुत मौके मिले उस लड़के को, and because he got the chances, that's why Umran Malik did not get chances. अब शामी की बात, जब शामी का इतना खराब वर्ल्ड कप रहा लास्ट ईयर, I get why they said भैया आप 35 के आसपास होने वाले हो,
आपको हम साइड कर रहे हैं. So I would not compare Avesh Khan with Shami because Shami is much older and frankly I think he's played 17, 18 T20Is in a 9-year career. That's enough to say कि टीम उन्हें T20 bowler ज्यादा नहीं मानती है. रही बात उमरान की, I think Umran, when you have an IPL that he did, when you bowl at the pace consistently, 150 से ऊपर आप bowling करते हो, जब आप डेथ में विकेट लेते हो, जब आप ओपनिंग में आके विकेट लेते हो, तो कुछ आपके पास है वो. उन्हें मौके मिले आयरलैंड में. I would have liked to see him get at least one more bilaterals. I think he should have gone and bowled in Zimbabwe क्योंकि जब आपके पास वो पेस है, जब आपके पास वो क्षमता है कि आप पिच से इतना उछाल निकालें, he would have been a very very good pick, maybe a left field pick for this T20 World Cup based purely on how fast he bowls. He was not given. I think they gave Avesh Khan too many chances, but more than Shami, I would like to see some of those chances go to a young tearaway quick like Umran Malik. Ashutosh, do you think Syed Mushtaq Ali was late as we could have checked caliber of domestic players? यार domestic players ने इतना कुछ किया है लेकिन selection domestic में नहीं होता ना भाई. Selection होता है अक्सर IPL को लेके. तो it's fun to watch Syed Mushtaq Ali. Often a lot of IPL contracts come from Syed Mushtaq Ali tournament performances, but Syed Mushtaq Ali is not stepped to come to the Indian team unfortunately. नहीं है भाई. नहीं तो the Prithvi Shaw team में होते. I think unpredictability is coming from UAE toss factor itself. आदत हो गई थी टॉस जीतो मैच जीतो. बिल्कुल, and I hope this pattern gets broken in Australia. मेरे हिसाब से ग्राउंड्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, और क्योंकि कोई भी टीम इतना टॉप फॉर्म में नहीं है, this could be the most unpredictable World Cup. Ajay Sharma saying Pant will play? No chance. पंत अगर आपके टॉप 4 में नहीं आते तो वो आपके 11 में नहीं आते क्योंकि आपको 6 बॉलर खिलाने पड़ेंगे और डीके इज योर फिनिशर. तो पंत का कोई चांस नहीं है. पंत has got immense chances. Only Pant can blame himself for not being in India's 11 right now. बहुत टैलेंट है बट वो T20 प्लेयर है ही नहीं कहीं से. पंत fantastic test player, good one day player, disastrous T20 player. Creature life. You're back. How are you? My name is Kashi. Hi Kashi. काशी बोलो. ये creature life क्या होता है भाई? आप लोग अपने सही के नाम क्यों नहीं देते हो यार? Just call yourself what you are. Yeah, my name is Jamie. I am Jamie. If your name is Deepak, come as Deepak. If you're Kashi, come as Kashi. किसी और का फोटो लगा के या किसी ब्लैंक फोटो लगा के, पता नहीं, ये थोड़ा मुझे लगता है कि यार आप लोग खुद जो हो, आपकी जो पहचान है, आपका एक वो डालो यार सामने. Anyways, I have a question apart from India, Pakistan. Thank you. Good question. We have seen teams like Ireland and Netherlands from the past 10 to 15 years. Why can't they just play the main round instead of playing qualifiers? इस टॉपिक लेके हमने ऑलरेडी बात किया है इस शो पे. कमर्शियल्स, बम्स ऑन सीट्स, व्यूअरशिप, ये टीम्स ग्लोबल व्यूअर्स को नहीं लाते हैं. इन टीमों के मैच जो हैं वो लुक्रेटिव नहीं है स्टार स्पोर्ट्स के लिए, सोनी के लिए, जो भी ब्रॉडकास्टर है. इनके मैचेस क्योंकि लोग देखने नहीं आते, इनके मैचेस फाइनेंशियली वायबल नहीं है. अफसोस की बात है, बिल्कुल गलत बात है, बट काशी फैक्ट ये है. दिस इज द रीजन व्हाई. मुझे याद है कि 2015 में स्कॉटलैंड के कप्तान, हॉलैंड, नेदरलैंड्स के कप्तान, मैं वहां पे था, मैंने इनसे पूछा था, स्कॉटलैंड के कप्तान से, अफगानिस्तान के कप्तान से, नेदरलैंड्स के कप्तान से, प्रेस्टन मॉम्सन, मैंने पूछा था 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको क्या लगता है, क्योंकि उसी समय ये खबर आई थी कि अगले वर्ल्ड कप में 16 टीमें जो हैं वो कम होने वाली है. एंड दे ऑल सेड हम जो खेलते हैं खाली मैदान में वर्ल्ड कप्स के बीच में, हम इस मकसद से खेलते हैं कि हम ऐसे प्रदर्शन दें कि we get picked for these tournaments. And when the ICC reduces the chances, it really makes us feel, let down. But it comes down to Kashi because they are just not financially lucrative matchups. This is why Ireland, UAE, Namibia, Scotland, these teams, they have to qualify because that's what it is. The ICC and the broadcasters want more test level playing teams to make it. Sumit is here for the first time. People are saying this will be the last T20 World Cup for Kohli. What's your take? Yes, I agree with you. I think 2 months ago I was asked this very question. अक्सर 3-4 बार मुझसे पूछा गया था और मैंने कहा था कि कोहली का जो फॉर्म चल रहा है खराब फॉर्म था उनका across formats, and because he's 34, I said, look, if the guy is fit, he could play the 2023 One Day World Cup and he could play the 2027 One Day World Cup. Yes,
If the hunger, if the form, if the fitness stays with Kohli, he could play two more one-day World Cups. But to do that, he's going to have to drop one format. Before Kohli came back to form in the Asia Cup, I said he may quit after the T20 World Cup, regardless of where India lands up. But now Kohli's got some runs in the Asia Cup against Australia, against South Africa. और जो visuals मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे दोस्त हैं विमल कुमार, मेरे former colleague IBN 7 के टाइम से, जो मैं उनके वीडियोस देख रहा हूँ, कोहली के चेहरे पे एक calmness है. Kohli is often smiling in practice, often dancing, jiving, backslapping, giving galis. But there's a certain calmness, a certain peace that I have picked up from Kohli's mannerisms. And I think this is going to put him on the road for a fairly successful T20 World Cup. लेकिन उसके बाद Kohli will have to assess, because when you're an elite sportsman playing three formats and you're Virat Kohli, what a batsman, yeah, wow. When you're that big, when you're the face of, frankly, a pretty poor IPL franchise, you have to keep yourself in top form. अगर आपके रन बंद हो गए, अगर आप फिट नहीं हो तो आपके endorsements जाएंगे. It's a very lucrative but also a very tough and perhaps unfair place for Virat Kohli to be in. So, can he play the next T20 World Cup? Yes. But can he do that while playing three formats? I don't think so. विराट कोहली को एक फॉर्मेट छोड़ना पड़ेगा अगले साल, 2 साल के अंदर, and that is where the answer will be. Will it be one days or will it be T20s? Because he loves Test cricket. He wants to come back and score 5 more hundreds, and I think Kohli will play more Test cricket than he will play T20 cricket. He's going to have to drop one format, and gut feeling says it will be the T20 format. Yes, Sumit, his fitness is too good. Ashutosh, who will benefit from the bigger ground tomorrow? India, because India's batsmen can find the gaps more than Pakistan's can. Dixon Sider, it's unfair, sadly. These teams deserve to play with the big boys. I love watching the qualifiers, some decent game. Absolutely. I had a blast watching the matches. Unpredictable round. West Indies beaten 2 out of 3. Sri Lanka beaten by Namibia. Sri Lanka struggling. I know the margin was big, but Mayappan took a hat trick against them. And even that last match they won, Sri Lanka just did not look like a side that deserves to be in there. Netherlands played well. Zimbabwe played well. A lot of fun matches in the 1 week of qualifiers. So that's why I think it's going to be a very unpredictable World Cup. Siddharth, thank you, my friend. Always love your analysis. Thank you. By the way, will Shami be playing tomorrow in Australia virtually unbiased stupidity? I think you joined the stream late. I've addressed the Shami question 4 or 5 times now. I don't see Shami playing tomorrow because, I'll say it again since you come a little late and asked this question. He will not play because he's not played a T20I match for 1 year. He's not played a white ball match for 4 odd months. And even in the IPL, he was not viewed by his own franchise as a death bowler. He's rusty. Yes, he took 3 wickets right now in the practice match, but those 3 wickets, in my mind, will not be enough to push out someone like Arshdeep. I think Bhuvneshwar, I'm going to say it again, Bhuvneshwar and Arshdeep are picks. The battle would be between, for the management, would be between Shami, who's just come back after 1 year and bowled a fantastic last over, full of Yorkers, it must be said, and Harshal, who's been struggling since he's come back, but Harshal has played more T20Is this year than Shami has played in his whole 9-year career. So, given the track record that Rahul Dravid and Rohit have shown of rewarding consistency, I think it'll be Harshal over Shami in tomorrow's match. उसके आगे क्या पता? Vivek, why try series and not play? बिल्कुल, मैं तो 3 साल से कह रहा हूँ भाई, वनडे क्रिकेट में खासकर बहुत हद से ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं ये बायलैटरल्स. 6 मैच की सीरीज, 7 मैच की सीरीज, 5 मैच सीरीज, भाई कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. Yes, there's a super league by which the more matches you win in bilaterals, you get placed higher up in the World Cup standing. But भाई bilateral one day बहुत ही पका हुआ मेरे लिए. Bring back the tri series. How fun was this T20 tri series between Pakistan, New Zealand, and Bangladesh? I would love to see, my friend. I would love to see Vivek more bilateral more tri series and the odd quadrangular, because how fun were these series in the 80s, 90s, and even the early 2000s. Vivek saying Arshdeep and Harshal no ball problems. Harshal for sure. Arshdeep only in 2 matches, so I think Arshdeep is our best death bowler. I don't think it'll be a problem. Do you agree this is the weakest fielding team after a long time? After a long time, this is the weakest Indian team. Weakest team.
Ashutosh, who takes the crown for most annoying fan base worldwide? You're gonna get me in trouble here. I think Bangladesh fans can be very in your face and very perhaps too much. Like the whole Nagin dance thing from Mushfiqar. I think it backfired. I think English fans, despite the love they have, I think they're so jingoistic. मतलब वो अपने टीम के आगे कहीं देख नहीं पाते हैं. So I think Barmy Army fans are entertaining, but sometimes it gets a bit too much, a bit too jingoist. But if you're asking me, most annoying, unfortunately, जितना भी मैं देख चुका हूँ ग्राउंड में और सोशल मीडिया पे, बांग्लादेश फैंस आर प्रीटी अनोइंग. We don't have any replacement of a Seymour all-rounder. We do. We have Shardul Thakur, who's in fantastic form, but unfortunately, he's not being picked. Siddharth, do you honestly see ODIs having any future? There's future if you give context. Reduce these 5-match series, boss. Every tour, yeah, मैं 3, 4, 5 साल से कह रहा हूँ. Every time a team goes somewhere, the number of matches across 3 formats should be split. If you're playing 3 test matches, then play 3 T20s and play 3 ODIs. Do not play 2 test matches, 3 T20s, and then 5 one-days. Make it even. Easier said than done. Give it context. The Super League was a good idea. I don't know why it's being scrapped, but you're just playing too many bilaterals. It's not that ODI cricket has become boring. I think Champions Trophy and World Cup, they have the place and they're very entertaining. Sorry. But what happens is when you're playing a 5-match bilateral or even a 7-match, okay, अक्सर हम देख चुके हैं, if one team wins 3-0, why do you have to go play those last 2 matches? Go the MLB way. Go the NBA way. If a team wins the World Series or the World Championships, you don't play those 2 matches. You reimburse the fan or up because there's no point to it. No. Why would I want to watch a 5-match series when one team has won the first 3 and they've smashed? Oh, बाकी के 2 match में क्या रखा है भाई? So I would rather do it with these matches. Give it context. By context, I mean give more competitions, more trophies, tri-series, quadrangular. And it's not about भैया जगह नहीं है. नहीं, जगह बन सकती है. आप bilaterals को कम करके अगर आप हर टीम के 8, 10, 10, 12 bilaterals कम कर दें और उस बीच आप कहें कि भाई आप यहाँ पे आइए, आप एक quadrangular सीरीज खेलिए, देखना, दावे से कह सकता हूँ, फैंस बहुत ज्यादा आएंगे यहाँ पे. Okay, couple questions. Ashutosh, the Rohit versus fan base is stupid. I agree. That's really bad fan base. Australia 111 और क्या बात है? खबर मिली है. Breaking news. Thank you. Dixon Deepak is saying, not Dixon, Deepak is saying, I love ODI cricket. That's off to you, man. That's off to you. Last question because it's 4 o'clock. It's been an hour. Should IPL develop a Division 1 and Division 2 with qualification? नहीं भैया, भाई IPL 8 टीमों के साथ 2 महीने जाता है. बहुत लंबा टूर्नामेंट है ये. Keep it. Do not tamper with the IPL. Do not even add more than 10 teams. भाई बहुत टीम्स हैं. इस बात से मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. प्लीज आप 10 टीम्स पे ही रखें. बहुत है भाई. दोस्तों, it's been an absolute pleasure. Thank you for watching. ICC tournament specialist Kiwis. बिल्कुल. Cup of tea, cup of coffee. शिवम सिंह. दोस्तों, बहुत मजा आया आपसे जुड़ के. आप कल 12:30 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं ग्लांस लाइव पे. मैं सौरभ पंत और मनविंदर बिस्ला के साथ अपना डेली पॉडकास्ट करूंगा ग्लांस पे. मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा. आप कल cricket.com सर्च फॉर cricket.com, नॉट cricket.com.au, cricket.com. आप कल इंडिया मैच के बीच मेरे साथ आप वहां पे लाइव जुड़ सकते हैं. आई एम डूइंग अ लाइव वॉच अलोंग in the second innings of every India match with staff and the viewers of cricket.com. Of course, I'll be on this channel. Enjoy your Saturday, enjoy your weekend, and let's hope we get a full India versus Pakistan match tomorrow. Love you all. Thank you for all your questions, all your comments, all your support. I will see you tomorrow with another video. Take care. Enjoy your weekend. Goodbye.